से ये पाकिस्तान के लिए मुस्कुराहट वापस आना जीत के साथ, और जो इतना बड़ा गैप लिया था यूजली यूज के जो कि इसमें ऑफ मनी का बैक फायर करते हैं। देखिए, आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ज़रूरी थी ये विन। हमने पहली बात की थी कि एक्सेप्टेबल नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट की जो रिजल्ट्स रहे थे रीसेंट पास में, लेकिन रिलीफ है। आई थिंक चाहे आप क्रिकेटर्स से पूछें, फैन से पूछें, इवन जो क्रिकेट फॉलो करते हैं आप उनसे पूछें, आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट के लिए विन बहुत ज़रूरी थी। सेकेंडली, शायद भाई आई डोंट थिंक कि स्पेशली जब से मैं आया हूँ हमें रिस्क लेने में कोई प्रॉब्लम हुई है। हमने हमेशा कोशिश की है कि हम वो क्रिकेट खेलें जिसमें रिजल्ट्स आएँ। कुछ मैचेस हम उसमें मैचेस काफ़ी हारे भी हैं उसमें, बट कोशिश ये है कि किस तरीके से हम वो क्रिकेट खेल सकते हैं जो हर जगह ऐसी टीम बने जो हर जगह रिजल्ट्स निकाल सके। तो ये एक अच्छा स्टार्ट था। आई थिंक बैट्समैन और बॉलर्स का जो मैंने पहले भी बात की थी, जो पार्टनरशिप थी पहली फर्स्ट इनिंग्स की, उसका मिलावट था, और आई थिंक रिजल्ट भी फिर हमारे सामने था। शान, सबसे पहले बहुत मुबारक विक्ट्री थी। शान, फाइनली 20 विकेट्स फॉर बॉलर्स, तो क्या समझते हैं कि फाइनली हमने फार्मूला कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट किया है होम पे टेस्ट मैचेस जीतने का स्पिनर्स के साथ और इन विकेट्स के साथ? देखिए, एक लंबा प्रोसेस है, ये एक लंबी जर्नी है। ये ओवरनाइट, जिस तरीके से हमने हार में भी कहा था कि ओवरनाइट ठीक नहीं होगी, तो जीत में भी अभी सेम मेरा आंसर होगा कि ये ओवरनाइट ठीक नहीं होगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। जैसे मैंने कहा, 20 विकेट्स टेस्ट मैच में नॉन निगोशिएबल है। आपने 20 आउट करना है। आप 20 आउट के बगैर सिर्फ तभी मैच जीत सकते हैं कि अगर दूसरी टीम डिक्लेयर करके ऐसा पुश करे। और फोर्थ इनिंग्स में हमने देखा है कि हर जगह कंडीशंस बैटिंग फ्रेंडली नहीं होती। कोई एक आती आपको 10 में से टेस्ट मैचेस मिलेंगे जहां होगी। तो इसमें अब हमने ऐसी टीम बनना है कि ऑब्वियसली अपनी कंडीशंस को अंडरस्टैंड करना है, और साथ में ये देखना है कि 20 विकेटें जिधर भी हम खेलें, चाहे वो पिच फ्लैट हो, चाहे वो पिच सीमिंग हो, चाहे वो पिच स्पिन हो, हम किस तरीके से कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं टीम के, और किस तरीके से बैटिंग और बॉलिंग में स्पेशली फर्स्ट इनिंग्स में पार्टनरशिप्स लगा सकते हैं जो हमें मैच जीतने की पोजीशंस में लेके जाए। तो ये एक अच्छी चीज़ थी। इस मैच में हमें लीड मिली, तो वो उसमें हुआ क्या कि जो थर्ड इनिंग्स का प्रेशर ऑब्वियसली होता है कि आपने टारगेट सेट करना है, बट 75 की लीड ने हमें हेल्प किया कि जहाँ हम 200-220 रन करेंगे वहाँ 300 का टारगेट होगा। From personal perspective, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म था आप पे coming into this match। जब आज सुबह आप उठे तो what was going through your mind? देखिए, क्रिटिसिज्म रहेगा। क्रिटिसिज्म को कोशिश करता हूँ जो वैलिड होता है उसको कंस्ट्रक्टिवली देखता हूँ, और जिसको नहीं देखना होता कोशिश करता हूँ कि उसको बस एब्जॉर्ब करें और उसको साइड पे करें। और देखें, ये मेरे बारे में नहीं है। दिस इज़न्ट अबाउट मी। ये पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में, पाकिस्तान टीम के बारे में। और हम सब, जो मैंने पहले भी वर्ड यूज़ किया था कि बहुत सा मतलब हमने दुख महसूस किया था। वी वर ऑल हर्टिंग के किस तरीके से हमने पिछली सीरीज़ भी स्लिप होने दी, कुछ रिजल्ट्स ऑस्ट्रेलिया में भी स्लिप होने दिए, और हम चाह रहे थे एज ए ग्रुप कि हम इसको किस तरीके से टर्न अराउंड कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश इस मैच में ये थी कि हर दिन हम अपना बेस्ट एफर्ट देने की कोशिश करेंगे, और आज का दिन ये था कि अब हमने 8 आउट कैसे करने हैं। एंड आई थिंक जो एफर्ट था टीम का वो सबके सामने था। Congratulations on ending the losing streak or winless streak and your first test run as captain. So there was a lot of talk about the template prior to this game and ever since you basically become Pakistan's captain. And we've seen Pakistan create flat decks and try for, green blocks as well. The turn there has brought a result. It was a reuse service. It might not be a feasible solution moving forward. And do you think for Rahul Pindi, you would want a similar service, and what would be that template moving forward? Look, like I said, it's not an overnight process. When you look at other teams, like let's say when you look at Australia know that in Brisbane they're going to get a bouncy track that's going to seam around. In Sydney they're going to probably play 2 spinners over there. So for us, number one, it's about assessing our home conditions and knowing the difference of each ground. I don't think we can go to a strategy where we go like, oh, we have to have a spin wicket everywhere. You have to know the characteristics of your ground, the characteristics of your soil to be a good test team. And again, for us, going forward, what was heartening was not winning on a spinning wicket, but
changing strategies last minute and responding to that change of strategy. I think that's something that we can take forward. So for me, from my side, the challenge to the group would be whether we play on a flat one, whether we play on a seaming one, how can we take 20 wickets and how can we as a batting unit back up those 20 wickets with the required runs. कुछ अर्सा इंतजार करना पड़ा पाकिस्तान को और आपको कामयाबी की, तो आज भी कामयाबी दी है, इसके हवाले से आपकी फीलिंग और टीम की फीलिंग क्या है बताइएगा, और सीरीज में वापस आए के लिए क्या का टेस्ट उसके हवाले से। सर मेरा आंसर फिर सेम है कि ये मेरी फीलिंग जो भी हो, आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि पाकिस्तान के लिए इधर विन आई है। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि एक तो आप अपने मुल्क के लिए खेल रहे हो, फिर आपका मुल्क मैच जीत रहा है। आई थिंक हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। आप किसी भी स्टेक होल्डर से पूछेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, आई थिंक ये वो जीत थी जो हम सब कह रहे थे कि हमें ज़रूरत है इस वक्त इस जीत की। तो उस सेंस में बहुत खुशी है। और देखें सीरीज़ अब 1-1 से बराबर है, हमने अपने आप को चांस दिया है। पिंडी जाएंगे, कंडीशंस देखेंगे और बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 उतारने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे जिस तरीके से लड़कों ने इधर परफॉर्मेंस दी है उसको वापस रिपीट करें इंशाल्लाह। शान भाई, आप हमेशा अपनी जगह के पाकिस्तान फास्ट बॉलर्स के साथ रहना चाहते थे और आप इस सीवर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे, तो अचानक इतना बड़ा फैसला ड्यूरिंग द सीरीज के हमने शाहीन और नसीम जैसे हमारे प्राइमरी बॉलर्स से उनको ड्रॉप करके स्पिनर्स के साथ फैसला किया था, तो इस फैसले के पीछे क्या रीजन थी और आपका इसमें कितना इनपुट शामिल था? देखें, आई थिंक जब सिलेक्शन कमेटी आई थी नई, हम सब साथ बैठे थे, तो हम सब का एक ही कंसर्न था जो पिछले मैच में हम पूरा नहीं कर सके और जो हम समझे कि हमने 20 विकेटें मेरे टेन्योर में सिर्फ मेलबर्न में ली थी। तो अब वही सवाल था कि हमने देखें टेस्ट मैच जीतने के लिए 20 आउट करने हैं, तो हमने कंडीशंस को देखते हुए हमने देखा कि 20 आउट किस तरीके से किए जाएंगे। तो हमें उसमें नज़र आया कि अगर हम यूज पिच पे खेलते हैं, स्पिनर्स को एडवांटेज देते हैं, और वही चीज़ के वाई नॉट ट्राई समथिंग डिफरेंट। जब एक चीज़ काम नहीं कर रही तो कभी कभार बेहतर होता है आप अपने दूसरे ऑल्टरनेटिव को देखें। और देखें, आपको क्रेडिट देना होगा नुमान और साजिद को, जिस तरीके से वो वापस आए हैं, कम बैक किया। ऐसा लग रहा था 2 सीजन कैंपेनर्स पाकिस्तान के लिए बॉलिंग कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें, जैसे शाहिद भाई ने पहले क्वेश्चन में बोला था, ये रिस्क लेने पड़ेंगे। टेस्ट मैच का देखें असूल है 20 आउट करने। 20 आउट कैसे करने हैं, चाहे वो हम टर्नर पे करें, चाहे वो हम सीमर पे करें या फ्लैट पिच पे करें। Simon, please. Congratulations. Thank you. Obviously, it's been a long time since Pakistan won a test here at home, and it felt like the team was in a difficult place a week ago. So, what difference does this win make to what the future of the team? Look, I think I was just in the post-match ceremony and Urud said it was 3 years and 11 months. I think that's not acceptable for Pakistan cricket. We pride ourselves on how well we play this game and how we see ourselves as a team. So for us to get a result and hopefully start something here in our own conditions, I think, and then also you look at adversity. I think going through that adverse situation for years and still getting a result, I think that's the character you want from your players, from your staff, from your cricket board. And I think everyone's been spot on this week, and everyone's responded well to whatever circumstances we had presented to ourselves after the loss last week. So very heartening. I feel at the end of the day it's about characters that come onto the field, characters off the field, and I think a lot of people showed their character and invested in a good result for Pakistan this week. You made a big gamble on the pitch and on your team selection. How different do you think the game would have gone if you hadn't got the toss? Look, I think hindsight's always 20/20. There would have been a different way of playing about it if we didn't win a toss. But I can say the same thing. We played against Bangladesh on green seamers where it rained overnight before the first test match, and it rained for the whole first day, and we lost the toss both times, but we still responded with good first inning scores. So for us, like I said, we knew what we were doing wrong. We were failing to have that partnership between bat and ball in the first innings that can set a test match up.
I thought we've done really well as a batting unit in the first innings of the 4 home test matches that we've played so far, and it was just about getting those 10 wickets, and getting those 10 wickets were very heartening. And when it comes to risk, you have to take risks. I think you come from England, and England take risks every day, and they've shown the way. So if you want to win test matches, you have to take risks, and you have to get 20 wickets. So whatever gets us 20 wickets, we're willing to do that. Sean, you just touched on this, and it's not as simple as having the same plan at every ground. But would you like it to turn in Rawalpindi? I would. I don't know if I've seen a turn in Rawalpindi. That's another issue. But look, again, like I said, what you want a side that can win anywhere, and where I thought that England's effort was commendable, it was last week. They found a way to get 20 wickets, and that's the test side that we want to be. We want to get 20 wickets wherever we play, and we want to back that up with the bat. That's not making an excuse that we're going to let the batting off the hook. The batting has its job, but the job is to support the bowlers in getting those 20 wickets and winning a game for Pakistan. I know you're not a groundsman, but I don't think there's been any cricket in Rawalpindi for a little while. Is it even possible to get something similar to what you've had this week? Look, I think we're still towards the end of I don't think there's an autumn in Pakistan. There's a summer that transitions into a winter. So we're still hoping that the sun can play its part, and the wicket can be on the drier side. But again, it remains to be seen. We'll go there on the 20th. We'll have a look. I think the groundsmen are already there. They're working on a test match pitch, and we'll try to create a good test wicket where both teams can pick up 20 wickets. Shan. I just wonder if you can tell us who takes credit for the decision to reuse that pitch, because there's a lot of selectors, a captain, a coach, a curator. Whose idea was it? It's a team game, so it's a team effort, and I think. But I like to give credit to everyone else. I'm happy with the win. The coaches, the selectors, and look, the players. You have to step in for 5 days. You're playing one of the best teams in the world, and to beat them in any conditions, I think that speaks volumes of you as a side, especially responding after some adverse conditions, adverse circumstances. So yeah, I'm happy giving the credit to everyone that was involved in making the team and deciding the conditions, and at the end of the day, it's Pakistan cricket. We're all stakeholders, and we have to make sure what's best for Pakistan and try and implement that. Thank you so much. Thank you.